Good morning, everyone, and welcome to Morning Con Call. First, to start with technicals and derivatives updates. In yesterday's session, if you see, the index has gave up its three sessions of gaining from the lows of 18,345 to 18,700 levels. 18,700 levels acted as a barrier for the bulls to go ahead. And in the second half, if you see yesterday, we saw panic selling to the tune of breaching 18,500 and 18,400 also for a brief period, but index, however, managed to stay above an 18,400 levels. Now, currently, if you see the 18,345 zone, that is the 3 days previous low or the swing low would act as an immediate cushion. If that is breached, the index would be heading towards 18,200 and 18,000, and that is also eventually in 50 SMA zone of the index. That is at 18,060 levels. So that should be an ideally support levels if we breach today's low. And we are saying that in the SGX also showing a gap down of 60, 70 odd points. So 18,400 would be taken out. On the sectoral front, if you see the 90 was the Lagarde yesterday, it was the drag for the Nifty led by PSU Bank, PSU Bank's metals and real estate. Or mostly all the sectors were in the red, barring oil and gas, which was only flat. So now directionally, if we see, then 18,000 would act as a proper base for the Nifty, and after a much rally, we anticipate that this rally should be healthy, and this correction should be an opportunity to be at longs. Vis-a-vis Bank Nifty, Bank Nifty also tested its 10 EMA levels and index was down overall by 550 points. So Bank Nifty 43,000 would act as an immediate base over here, and for 43,000 is then another 1,000 points would be taken in a very swift movement in the Bank Nifty index also. So overall for the Bank Nifty, the major view is still bullish till the 43,000 is ahead. If 43,000 is breached, then we need to recheck with the indexes. On the futures front, if we see, we saw a short build up in the index to the tune of 4%. That is addition of 5 lakh shares. The PCR also dipped below 1, and it is now standing at 0.76 levels. And on the options front, if we see, then 18,600 and 18,500 are seeing the hurdles for the index, and only the low 18,400 is having the highest interest on the support side and led by 18,300. Similarly, in the Bank Nifty also, Bank Nifty saw long liquidation to the tune of 6% and reduction of by 2 lakh shares. PCR also dipped from 1.2 to 0.75 levels. In the options front, if we see, the major additions are seen in the put at 43,500 levels, while 44,000 still again acted as a hurdle for the index. On the stock specific front, top 3 long build-ups were seen in Havells, City Union Bank, and Persistent, while the short build-ups were seen in PNB, Coalpal, and Page Industries. Coming to the FIS front, FIS were short in the index by 710 crore rupees in the cash side, while the DIS had bought for 260 crores. On the futures front, they also reduced their positions by 20,000 contracts. Now they are net long by only 12,500 contracts. And the long short ratio previously from 60% had reduced to 54%. So FIs are also slightly turning their positions to the bearish side. So the stocks to be kept on radar should be Chambal Fertilizer and PCBL. These stocks are looking good. So any corrective move should be an opportunity to be bought. So that's it from mine. I'll hand over to Bhavesh sir for Yeah, good morning, everyone. So firstly on PSP projects. So yesterday the PSP projects conducted a investor meeting where they maintained that their order book inflow guidance of rupees 2,500 crores, which is very strong for FY23. But we understand that given L1 orders and few orders in advanced stage, actual inflow could be as high as rupees 3,500 crores. So revenue growth guidance was maintained. This implies that revenue growth in H2 FY23 could be 35%, and we maintain our buy rating on the stock. Secondly, Kajaria, there is a joint venture agreement between Kajaria International and Al Rathi Marble. This JV will carry out business of glazed vitrified tiles, sanitary ware, bathware products, etc. So they will get an equal proportion of share. So this is like small positive for Kajaria. Then on Wipro, so Wipro has won a 5-year agreement from Mazda Motors to provide managed services, which is expected to result in cost savings and better performance. But the deal size is not known, but nevertheless it's a positive. Then on Bharti Airtel and TechM, they've announced a partnership to deploy 5G solutions at Mahindra's Chakan manufacturing facility. So this will make India's first 5G enabled auto manufacturing plant. So this is positive for Tech Mahindra.
Then Tata Elxsi announced the opening of digital engineering center in Frankfurt, through which it will provide digital solutions for mobility, media, healthcare, communications, etc. So this center will host around 30-40 engineers by end of FY23, which will actually go up significantly in next couple of years. So this is positive for Tata Elxsi. Lastly, one negative development for Z Enterprise, where IDBI Bank has filed an application before NCLT to initiate insolvency resolution process for Z Enterprises. So IDBI is one of the creditors, and Z has already defaulted on rupees 149 crore worth dues. So that's a little negative for Z. And lastly, we have initiated coverage on Prince Pipes. So after Astral Supreme, now we have initiated on Prince Pipes. So there are multiple demand drivers for these pipe companies, mainly coming from agriculture, plumbing, in industrial infrastructure, etc., even real estate. And so industry is consolidating, organized players are gaining market share. The order backlog for all these companies remain very strong, and Prince has a very good brand. Although number one in this industry has always been Astral, but the other companies, everybody is benefiting, including Supreme Industries, Prince Pipes, and even there is a new entrant, Apollo Pipes. So the valuation wise, Prince Pipe is trading at 25 times FY25, compared to Astral Poly, which is trading at nearly 60 times. So we have assigned a multiple of 35 times and derived a target price of 842, and uh, we assign a buy rating and initiate coverage on the stock. So that's it from me. Over to you, retail team. Good morning, everyone. Thank you, sir. Further news update. Kotak Mahindra Bank has hiked the interest rate offered on its fixed deposit for amount below rupees 2 crore. The revised interest rate on FDs are effective from December 15, 2022. The revised interest rate is applicable for domestic, NRO, and NRE deposits. This is the third time the bank increased FD interest rate since December 9, 2022. Electrical good manufacturer RR Kabel has started the process to launch a 2,500 crore initial public offering. Company has hired investment banks, Axis, JM, Citi, and HSBC to run the listing process. Kalpataru Power Transmission Limited, KPTL, on Thursday said it has bagged new orders worth rupees 1,397 crore in the transmission and distribution segment. The orders have been secured in India and overseas market in the T&D business. Axis Bank has increased FD interest rates for amount less than rupees 2 crore. The new rates are effective from December 15, 2022. The bank had previously hiked FD rates on November 15, 2022. Reliance Consumer Products Limited launches FMCG brand Independence in Gujarat. Independence offers a wide range of products under several categories, including staples, processed food, and other daily essentials. The government slashed the windfall profit tax on domestically produced crude oil and also reduced the levy on diesel. The sorry, the government slashed the windfall profit tax on domestically produced crude oil and also reduced the levy on diesel. The revised tax rates become effective from December 16, 2022. The government is likely to allocate funds to provide low interest loans and tax incentives to encourage startups in the agriculture sector in the upcoming budget. It will support startups in the field of artificial intelligence, machine learning, remote sensing, big data, blockchain, Internet of Things, geographic information system technology, and the usage of drones and robots to transform the agriculture sector. P. Fodler, a promoter of listed company GMM Fodler Limited, will sell a majority of its stakes in the company in a block deal that will fetch the shareholder rupees 2,278 crore as per deal.
The market capitalization of rupees 37,752.38 crore. Shriram Transport Finance Company Limited is a large cap company that operates as an NBFC in the financial services industry. The largest NBFCs in the nation has stated today that its board would consider an interim dividend and fundraising on December 24. Hindustan Petroleum Corporation Limited has approved raising up to 10,000 crore via NCDs on a private placement basis. HPCL stated that it has issued unsecured, redeemable, non-convertible, non-cumulative, taxable debentures of up to rupees 10,000 crore on a private placement basis in the domestic market and or in the international market. Over to you, Vijay. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी कॉल को हम एक बार हिंदी में कर लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं पीएसपी प्रोजेक्ट से। तो इसमें एक कल का जो इन्वेस्टर डे था उसमें कंपनी के ऑर्डर बुक्स के बारे में बताया कि उनकी 25 बिलियन के ऑर्डर बुक है FY23 के लिए। बट ये जो हमें ये लगता है कि जो उनके जो L1 के जो ऑर्डर्स है जो एडवांस स्टेज पे उसके जो एक्चुअल इनफ्लोस जो देखेंगे तो 35 बिलियन हो सकते हैं। तो रेवेन्यू ग्रोथ वो मेंटेन करके चल रहे हैं और उनके जो एग्जीक्यूशन जो है वो काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा इसमें बाय रेटिंग है, तो हम इसे 715 का बाय रेटिंग मेंटेन करके चल रहे हैं। इसके आगे एक अपडेट है कजारिया के ऊपर। तो कजारिया में उन्होंने एक कजारिया इंटरनेशनल DMCC UAE में एक जो होली सब्सिडियरी कंपनी UAE अल रतम मार्बल फैक्ट्री LCC UAE इनके साथ कोलैबोरेट किए 50-50 का जॉइंट वेंचर है। तो हमें लगता है कि ये एक पार्शियली पॉजिटिव न्यूज हो सकता है खजारिया के ऊपर। अगला न्यूज है विप्रो के ऊपर। विप्रो को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है मजदा मोटर्स से। तो ये कंपनी के इसमें आईटी को रिलेटेड है। तो ये कंपनी के जो कॉस्ट रिड्यूस करने और परफॉर्मेंस अपडेट करने के लिए ये एक उनके साथ कोलैबोरेशन। तो ये विप्रो के लिए ये काफी विन विन सिचुएशन है और ये पॉजिटिव न्यूज रहेगा विप्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसको पॉजिटिव मेंटेन करके चल रहे हैं। अगला एक न्यूज है भारतीय एयरटेल और टेक महिंद्रा के ऊपर। तो इन्होंने भारतीय एयरटेल ने टेक महिंद्रा ने भारतीय एयरटेल के साथ पार्टनरशिप दिया। वो 5G के जो फाइव जी सोल्यूशंस डिप्लॉय करने के उनके जो चाकन के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पर। तो ये फैसिलिटी से उनका जो वहाँ की जो ऑटो मैन्युफैक्चर फैसिलिटी है वो पूरे 5G से एनेबल हो जाएंगे और ये पॉजिटिव डेवलपमेंट रहेगा टेक महिंद्रा के लिए। इसके आगे एक टेक्स टाटा एलेक्सी के ऊपर अपडेट है। तो टाटा एलेक्सी ने अनाउंस किया कि वो डिजिटल इंजीनियरिंग सेंटर ओपन करें फ्रैंकफर्ट में। तो इससे वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 30 से 40 इंजीनियर्स को एम्प्लॉय करेंगे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23। और उनको यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है। सो हो सकता है यार ये 30 to 40 इंजीनियर्स का जो साइज है वो 100 तक जाए। सो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है टाटा एलेक्सी के लिए। तो हम इसमें बाय रेटिंग मेंटेन करके चल रहे हैं। अगला एक न्यूज है जी के ऊपर। जी के ऊपर IDBI बैंक ने एक NCLT फाइल किया जिसमें जी ने डिफॉल्ट किया 149 करोड़ का जो ड्यूज है। तो उसके ऊपर IDBI बैंक ने उनके उस केस फाइल की इंसॉल्वेंसी का जो रेजोल्यूशन इंसॉल्वेंसी का केस फाइल किया। तो ये टेम्पररी इस पे जी के लिए नेगेटिव न्यूज होगा। अगला एक अपडेट कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर है। तो कोटक बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट्स FD के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट्स है वो जिनके 2 करोड़ के नीचे उसके इंटरेस्ट रेट्स में हाइक किया है। ये जो डेट्स है वो 15 दिसंबर से है। रिवाइज इंटरेस्ट रेट है वो एप्लीकेबल होगा डोमेस्टिक NRO NRE डिपॉजिट्स के ऊपर। ये तीसरी टाइम है जो बैंक ने FD के इंटरेस्ट रेट हाइक किया सिंस दिसंबर 2022 से। सो ये इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग जो RR केबल है वो अ, अ, उसने 2500 के पब्लिक पब्लिक
ये आईपीओ के लिए उन्होंने ये किया हुआ है। तो इसके लिए जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को जो हायर किया वो एक्सिस है, जेएम है, सिटी है, एचएसबीसी है, जो ये लिस्टिंग प्रोसेस को फॉरवर्ड करेंगे। एक्सिस बैंक ने भी अपना इंटरेस्ट रेट को हाइक किया है, जिनके अमाउंट 2 crore के नीचे है। सो ये भी इनका भी डेट 15 दिसंबर से है। तो प्रीवियसली उन्होंने लास्ट अपना 15 नवंबर में किया हुआ था। तो अभी ये फिर से ये इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने विंडफॉल के जो टैक्सेस है उसको उसमें से थोड़ा सा कम किया हुआ है। जो डोमेस्टिक क्रूड प्राइस के रिडक्शन की वजह से इवन डीजल्स के ऊपर कुछ प्राइसेस उन्होंने कम किए, जो और इसका जो इफेक्टिव डेट है 16 दिसंबर रहेगा। तो अगला एक है एचपीसीएल के ऊपर। एचपीसीएल को ने अप्रूवल मिला है 10,000 crore के एनसीडीज रेस करने का। ये प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू होगा। सो तो एचपीसीएल बता रहे हैं कि ये है इश्यू किया उन्हें अनसिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टिबल और नॉन क्यूमुलेटिव टैक्सेबल डिबेंचर्स बॉन्ड से। ये 10,000 crore का होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू होगा। ये डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में दोनों ही तरफ पे। और एक अपडेट है सेम एचपीसीएल के ऊपर। तो एचपीसीएल देख रहा है कि वो अपना 50% स्टेक उनके जो सब्सिडरी कंपनी है उस पे वो शायद बेचेंगे। तो ये जो उनका जो कंपनी है उनका पहले उन्होंने सेटअप किया था शाहपुर जी के साथ, शाहपुर जी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें उनका 50-50% का जॉइंट वेंचर था। सो अभी वो उनके उसमें जो उनका मिनिमम 50% का स्टेक बेचने के लिए वो देख रहे। तो ये पॉजिटिव न्यूज हो सकता है एचपीसीएल के लिए। तो ये जो बेसिकली ये जो था ये गुजरात में है। ये उनका जो गैस ट्रांसमिशन के जो एग्रीमेंट के थ्रू था ये। और वो ये करीब करीब 85 किलोमीटर पाइपलाइन फ्रॉम पीपावाव टू चाचर, ये इस जगह पे ये गैस लाइन का फंक्शनेबल था। अगला एक न्यूज रबर स्टॉक्स के ऊपर है। तो हमने देखा कि रबर के प्राइसेस जो केरला में जो सबसे ज्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, 70% प्रोडक्शन केरला में देखा जाता है रबर्स के। जो वहाँ में टायर्स उसके प्राइसेस थोड़े स्लैश हुए हैं, गिरावट देखने को मिली है। सो बेसिकली ये जो नॉर्मल टायर मैन्युफैक्चरर्स और जो स्टॉकिस्टिक्स है, जो लोकल ट्रेडर्स होते हैं, उनके यहाँ से डिमांड के गिरने से इस टायर स्टॉक्स के प्राइसेस में थोड़ा सा गिरावट देखने को। बेसिकली ये कहा जाता है कि ये जो जो चाइना में जो अभी जो वापस इंडस्ट्रियल सेटअप जो स्टार्ट हुआ है, तो उसके कारण ये जो रबर्स जो वहां से इम्पोर्ट हो रहे हैं वो काफी सस्ते हो रहे हैं। वो एक रीजन हो सकता है जो यहाँ पे डिमांड फॉल होने के लिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर एंड हैव ए गुड डे।